करना सर आज क्या? आज देखिए आपके लिए तेज पत्ता लेकर आया हूँ। ओके। ये जो मौसम है ये ठंड के वजह अच्छा, काफी लोगों का सिर दर्द होता है। तो सिर दर्द के लिए क्या करना है आपको, इसका ये पत्ता को पेस्ट बना लीजिए। अच्छा। पेस्ट बनाने के बाद आप क्या करेंगे, 10 ग्राम पेस्ट को पानी में मिला करके पेस्ट करके अपना जैसे ये फोरहेड है यहाँ अप्लाई कर दीजिए, तो काफी जल्दी सिर दर्द ठीक हो जाता है। अच्छा, एक सिर दर्द के लिए दूसरा क्या काम है सर इसका? दूसरा है, कभी भी ये काफी लोगों का ठंड वजह से खांसी हो रहा है या स्नीजिंग जैसे कि तो ठीक है रहा है, तो उनको भी ये पानी में अच्छा से उबाल लीजिए। अच्छा। या कम से कम 1 गिलास पानी को आधा होना चाहिए, उसको थोड़ा थोड़ा पीने दीजिए तो ठीक हो जाता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Dear viewers, this is, everyone knows, this is tej patta or bay leaf, and mostly used in all kinds of veg, non-veg dishes. So this bay leaf has got medicinal value also. The first one we'll talk of. One is, in case of you are having headache, this can be grinded, and a paste of this can be just put on the forehead, and you'll get the relief from the headache. That's one. The second one also, during the winter time when you're having coughing, sneezing, cold, all those kind of and uneasiness on the throat, this can be put some 5 to 10 leaves in the water, get it boiled. The water can be reduced to the half of the person, and that half of the person has to be taken, or you can drink it sip by sip, and let it be for 10 to 15 minutes. It will be completely reduced. That's how the medicinal value of this bay leaf. This is the green one and this is the dry one. Thank you so much. Keep watching. Thank you so much, Thank sir. you, sir. Thank you. Thank you.